let's just end the beautiful podcast with a rapid fire round. Highest package? It's like 18 to 19 LP. Average package? Somewhere between 6 to 7. Your package? I would done this ball. चीटिंग करता है तू. GL Bajaj? Family. Welcome back to Provider's official YouTube channel. Today we are starting a new series. Hope you like it. तो जो हमारी series है, series is all about a student life journey. Student being a student and entering into a corporate world. Today we have with us a very special guest. She's very exceptional in the field of HR and currently she's working as Senior HR Executive with Bajaj Capital Limited. She has completed her post-graduation in PGDM from GL Bajaj. So without further ado, let's hear from her. Hi Astha. So thank you for having me on the channel today. Okay. So my first question from you would be that people of my age are generally confused between they should go for MBA or PGDM. So I just wanted to know that why did you choose PGDM and not MBA? Okay. So your question somewhere gives me a nostalgia, like takes me back to the place where I was actually thinking that I want to take like PGDM, MBA, or shall I go for something else only? So like I had two things on my way. MBA was giving me a complete academic exposure. So the kind of background that I'm coming from, I was always into books. So that was giving me an extra edge. Yes, I should go for MBA. But when I saw the world and when I saw people working in corporate, people like senior to me who are there in corporate, so they were gauging me a certain kind of thing that no, I should like academics is done. I have had enough of academics in my life. Now I need to learn how things actually work in corporate. So a lot of people suggested me that PGDM का जो curriculum होता है ना, it's designed in a certain way that it gives you a practical exposure. Every trimester the things gives you certain assignments, certain life projects, maybe a certain kind of plethora of intellects are there in those course that gives you an extra edge over MBA. I'm not saying that MBA is bad. It depends on what your choice is. Like either you want to like go in like आपको सिर्फ knowledge लेनी है and then you need to start something of your own, या आपको मतलब corporate कैसा होता है उसका experience अगर पहले लेना है. Just giving it a one line. If you want to know how corporate is actually, I think you should go for PGDM because I am completely convinced with the decision that I had कि मुझे PGDM करना है. So these were like small factors that like made me decide that I should go for PGDM. That's it. I hope हमारी audience का doubt clear हो गया होगा. And at the end, guys, I would say it's completely your choice. You want to go for MBA or PGDM. Moving further towards second question. So my second question from you is ki, how was your experience in GL Bajaj? Like past 2 years, how was it in PGDM? What was something, a factor, driving factor which you remember at this point of time? Okay. So before getting into details, the one word that I would give about my journey was it was overwhelming. Because so as a student and especially when you move out of your city, right, I came up with a lot of expectations and to be very honest, like those were fulfilled. Okay, so when I came here I had a lot of expectations कि जब class में जाऊंगी तो ग्रेजुएशन में जैसी क्लासेस होती थी पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं होगी बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ मूवीज सीरीज दीज आर वेरी फैसिनेटिंग फैक्टर्स और आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो आई केम विद अ लॉट ऑफ थॉट की मतलब हमारी क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें हमें सिर्फ सुनना नहीं होगा, हम बात कर सकते हैं लोगों से, फैकल्टी सिर्फ हमें सुनाएगी नहीं. यू अंडरस्टैंड, लाइक आई वुड बी देयर गिविंग माय ओपिनियंस एज वेल. Interaction. Yes, exactly, the word interaction. So the classes in PGDM were never a one way communication. Like faculties were not always there teaching us and not expecting us to like put on any doubt or come up with an idea. So if I talk about the curriculum, okay, so the curriculum of PGDM is designed in a very beautiful manner. So there are like few parts of it. One is the academics which is there in MBA, which is there in PGDM. You cannot ignore it. बिना books के देखो कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है, ठीक है? So at the end you need degree, right? So books were required. So there was a course. There were 6 subjects per trimesters.
And then there were few other things. So every trimester we were supposed to work on minor projects. So these were the things that used to give us a chance to learn about companies in detail. So we used to study about the companies, we used to study about how do they actually work, and finding some flaws and giving our opinion ki if we were there in that situation, to give an opinion to those companies. So learning from that, then we were having a chance to do internship on my own, like on our own, but not disturbing the classes. So there was a, like, and if you know about GL Bajaj is not exactly a college. It gives you more of a vibe of a school, more of an army school. They were very strict about attendance. So the people who are thinking about coming to GLBMR, just one point, be sure that you can attend the college on daily basis. So attendance was something that was, so every day I used to like get up ki haan subah jana hai, I need to reach at 9:15, otherwise I won't be allowed in classes. I can relate to you. Can relate. Yeah, MBA, right? MBA. So every day there was a motivation ki aaj jayenge, there would be something. And the curriculum was every Wednesday, every Saturday or Friday, right? There was an activity conducted. So there are a lot of clubs that we form. So in PGDM, every stream, marketing, finance, operations, HR, IT, be it IT, anything, and an extra one, that is sports, we have clubs. And accordingly, we decide activities. We perform. This is interesting. This is completely, and you know what? The plus point is, the teachers are not involved. The activities are driven by students, participated by students, led by students, everything is done by students. So you get an exposure, you own the activities, and when you participate, you win, then also you own those activities. I want to ask one question. So being a part of GL Bajaj, and my journey is still on, not completed yet. So I've seen the PGDM students wearing badges. So I want to know about the badges. So I'll tell you. So it's a very beautiful ceremony that we have. You might have heard about investitures. That you might have had school time, right? So it happens in BMR and PGDM course. So I'll tell you how it works. So every time when I did enter, so I was very late for the college thing because my father wasn't allowing me. He was like, "एक हफ्ता और रुक जाओ फिर चले जाना." And because of him being an emotional person, I joined my course 15 days late. So when I did enter, everywhere there was like campaigns going on, election का पूरा माहौल है, and so the first time I got into these things, and one of my faculty, I really appreciate her for being in my life. She suggested me कि election में खड़े हो जाओ. And then I stood up in an election, लोग आ रहे हैं, then we pitching people कि why I would be the right person, and I still remember I was elected as an academic leader. So ऐसे elections होते हैं, people, and I'll tell you, PGDM is a complete student-driven course. No faculty interference. Students were standing in the elections, students were voting for the elections, and then we getting elected as academic leader. So they were preparing you to be a leader. Exactly, vice president, secretary, likewise. So everything was done. Then there is a specific ceremony wherein we've been guarded with those badges, and we're taking the oath that we'll be very honest to our responsibilities. So they give us an ownership on certain things so that we know that when we enter corporate, whenever you get a designation, that's a replica, right? So whenever you enter into, as you mentioned, curriculum, working as a senior HR executive, right? So I have certain obligations, certain responsibilities which I need to be very honest towards. So likewise, we were taught at the very early stage that when we give you a responsibility, there are certain things that you need to adhere. So ये सब चीजें So badges looks like a motivation to students. Exactly. And you know what? Uniform की बात करेंगे हम PGDM की. So uniform हर course में है. GL Bajaj की सिर्फ बात करते हैं. Let's just not move to other colleges. But if you've noticed, PGDM का student कभी भी बिना uniform के नहीं दिखेगा. So when we say uniform, it's not about shirt, blazer and a trouser. It's about shirt, blazer, pant, a tie, your badges, and not just coming in a uniform, being a proper well-groomed person. From head to toe. If you see those students, they would never come like this. I was a person, I used to love my uniform. Because the way it is designed, black suit, that defines a corporate person, right? So if I talk about my 2 years in certain pointers, so it was about the events that I was a part of, the curriculum, the faculty members, my uniform, and the positions that I held. It was a confluence of everything. So the 2 years that I had, it's if I sum up, was overwhelming. I think after knowing all of your journey, I think my audience would have dreamt their position in GL Bajaj. अब आगे बढ़ते हैं तो
आपने जब डिसाइड करा होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो इन पीजीडीएम, तो आपने बहुत सारे ऑप्शन सर्च करे होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी, कि वाई ओनली जीएल बजाज? जीएल बजाज कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, और अगर जीएल बजाज में किसी को आना है तो क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है? बेसिकली द एडमिशन प्रोसीजर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप ये 3 चीजें मुझे क्लियर कर देते हो, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। Okay. So starting with the first question, okay, what led me decide कि मुझे GL बजाज में जाना है? So I'll be very honest. So I came to Delhi NCR. So why I came to Delhi NCR? The first question. क्योंकि मैं ना इंदौर में बहुत comfort zone में, so I'm from इंदौर first of all. So मैं इंदौर में बहुत comfort zone में अपनी पढ़ाई कर रही थी, पूरी पढ़ाई चल रही. So I wanted to get out of my comfort zone, अपनी family से दूर होकर अपनी सारी responsibilities उठा के पढ़ना. So first of all, the first decision was to come out. Then why GL Bajaj? So when I came in Delhi NCR, I did went through a lot of options. People usually go through. जो students देख रहे हैं, वो भी बहुत options देख रहे हैं, and that's why they're here watching us, right? So I came through a lot of options. So my elder sister, cousin, she did an MBA from here. ठीक है, so Okay, she from is GL Bajaj? from GL Bajaj. She is an alumni of yours. Okay. ठीक है, तो she suggested me कि if you want to get, so I was always into like academics अच्छा होना चाहिए, एकदम strict होना चाहिए. So she suggested कि ऐसा है तो go through the college once. So I like made a visit to GL Bajaj, and the kind of opinions that I got from students who were walking by, निकल रहे हैं classes से, तो the kind of opinions that these people gave कि even COVID के duration में भी these people made sure that academics इग्नोर नहीं हो रही है, द अदर एक्टिविटीज दैट आर देयर, दे आर नॉट गेटिंग इग्नोर्ड. सो देयर आर, और एक होता है ना, एक ट्रस्ट होता है कि माय सिस्टर इज आल्सो अ पास आउट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ सर्टेन प्लेस. बिकॉज मैंने ना एग्जाम्स वगैरह उतना नहीं दिया था सीरियसली, सो आई डिडंट हैड वेरी गुड ऑप्शंस लाइक IIMs. ओके, वी कैन नॉट कंपेयर टू अदर बुक्स, राइट? आई एम नॉट ब्रिंगिंग इट इन हियर. सो मेरे पास ऑप्शंस में जो कॉलेजेस थे उसमें से GL Bajaj वाज बेस्ट बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स. आई विल टेल यू व्हाई. And the kind of environment that these people bring in. You'll not always feel free कि हाँ मतलब बस मस्ती करो, and you'll always not feel restricted कि सिर्फ पढ़ना है. It's a mixture of both, balanced life. Okay, so ये reason था GL Bajaj decide करने का. अब I'll jump on academics के लिए क्यों मैं excited थी. तो इनका when you go for an admission and when you take admission, they'll give you a curriculum कि उनका curriculum कैसा दिखता है. सो द डॉक्यूमेंट्स दैट आई गॉट इन, उसमें ना मुझे बताया गया कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के भी की पॉइंटर्स लिखे हुए थे कि ये चीजें कवर होती है. और जिस तरीके के सब्जेक्ट्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थे, ह्यूमन रिसोर्स में भी इट वाज HR एनालिटिक्स, टैलेंट एक्विजिशन, L&D. सो यू हैव एन एक्सपोजर टू एवरीथिंग. और उसी से रिलेटेड एकेडमिक्स इन GL Bajaj, स्पेशली इन PGDM, इट्स नॉट ऑल अबाउट बुक्स. एकेडमिक्स का मतलब ही है मिक्सचर ऑफ बोथ. तो वो एकेडमिक्स इस तरीके से था, एवरी सब्जेक्ट हैड अ रिलेटेड एक्टिविटी दैट वी नीड टू फुलफिल इन दैट पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर. सो इट वाज गिविंग मी एन एक्साइटमेंट कि यार सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है, खुशबू साथ में प्रैक्टिकल करने में मिलेगा, तो वो बुक engaging, यस, एंड बुक वुड बी इजी फॉर मी कि मुझे जब उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा. सो एकेडमिक्स, और आपने देखा होगा MBA में ना सेमेस्टर सिस्टम होता है, every 6 months you get new subjects. Here every 3, so in 6 months I study 15 different subjects, you understand? So in 6 months I have 15 subjects that are there in my head, completed, not with book only, with some certain practical things, you understand? So academics जो GL Bajaj का है ना, I would say students like me and even the mediocre students, वो इस तरीके से डिजाइन किया ना, हर ट्राइमेस्टर में ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि स्पेशली अब इफ यू नो इंजीनियरिंग फील्ड से बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंजीनियर से MBA PGDM शिफ्ट करने का सोच रहे होंगे. अब वो लोग ये सोचेंगे यार हमने इंजीनियरिंग की है, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि करना चाहिए कि नहीं. ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइमेस्टर्स में उसमें बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डेटा साइंस, डिसीजन साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल फॉर मैनेजर्स. सो दीज आर सब्जेक्ट्स दैट विल मेक देम आल्सो कंफर्टेबल. सो वो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर ट्राइमेस्टर में हर सब्जेक्ट्स इस तरीके से दिए हैं कि इवन फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड कैन आल्सो कोप अप विद सर्टेन थिंग्स. So don't you think 15 subjects can burden a student? No, that's what the beauty of GL Bajaj. They would design it in a certain way you won't feel any burden. So there are 15 subjects, 3 trimester, so per trimester 3 months का एक trimester होता है, right? So every 3 months वो 6-7 subjects का वो जो conference होता है, तो वो subject को सिर्फ book से नहीं restrict करते हैं. We get a lot of assignments जिसको हमको present करना पड़ता है, तो वो एक chapter पूरा assignment बन जाता है, और वो chapter हमें ही नहीं पता लगता है. That's their strategy, you know. वो इस तरीके से हमें टॉपिक दे देते हैं कि वो चैप्टर हम खुद ही कवर कर लेते हैं.
So blending the practical and the theory Yes. together. So it's how Jail Bajaj works, GLBIMR if I talk about, they do not rely only on faculty members ki haan faculty members की beauty है, they do not only rely on themselves, हम सब पढ़ा देते हैं कर लेंगे, नहीं, if they do one part so the other part is expected from us. So it's a mixture of both. Then talking about how do you get in GL Bajaj or how do you get in PGDM, right? So how I got was a direct admission. I gave a like competitive exam. So how the competitive exam helped, I'll explain at later stage. So I got in, it was a walk-in, okay? I submitted my application. Few days later, I got a call from GL Bajaj. First was a call, like normal phone call. They did ask me certain question. Why did you apply for us? Why not two other questions? The same question. Same questions. The answer was different because I was very young. Okay, so you gave an answer for that. Then they ask you about your graduation. Then I was from Indore, so a lot of questions were why are you moving out of your city? And I did my graduation from a state university. So they did ask you why you not continuing from the like prestigious university. Why do you want to move out? A lot of questions. And then they asked me if you are here, then we would like to meet you face to face interview कर लेते. If you are only there in city, पता नहीं या तो ये मेरे साथ हुआ है सबके साथ होता होगा, or else they conduct a Zoom call. ठीक है, तो मेरे साथ एक Zoom call भी हुआ था और एक ये भी हुआ था because there was a lot of time जब मैंने अप्लाई किया, मैंने फरवरी में अप्लाई कर दिया था और ज्वाइन किया था अगस्त में. तो You were super excited. I was very excited. Whenever they used to call me, we have an interview. I was very excited. Yeah, I'll get the interview. तो अब इंटरव्यू में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं. You're not supposed to be worried कि IELTS जैसा इंटरव्यू होता है. लो की वर्जन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ दोस. सो आपके बारे में पूछेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, क्यों आप ये कोर्स करना चाह रहे हो, क्योंकि दे आल्सो वांट टू नो कि आप एक्साइटेड हो या वो बच्चा है जिसको घर से भेजा जा रहा है कि कोई कोर्स कर लो. दे आल्सो वांट टू इन्वेस्ट देयर एनर्जीज ऑन सर्टेन पीपल जो उसके लिए वर्दी हैं. एंड देन दे विल आस्क यू अबाउट आपका स्कोर्स ग्रेजुएशन में कैसा था, बिकॉज स्कोर्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. So there is a criteria of getting into GL Bajaj PGDM course. I guess above 55% होता है graduation में. Why do they say? Because there are certain universities जिसमें marking का system ऐसा होता है कि बच्चे usually do not get, like if you go in DU का marking pattern ऐसा होता है, usually people do not get those higher percentage, right? So वो होता है. Then the competitive exams that you give, उससे आपको एक फायदा होता है, scholarship मिलती है. I got scholarship, and there were other people. एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होती हैं. इंटरव्यूज तो होते हैं, एंड देन दे टेक योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन यू इफ यू सिलेक्टेड यू गेट अ मेल, यू आर सिलेक्टेड, एंड दे द जर्नी इज नॉट एंडेड हियर. दे सेंड यू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट देम, देयर करिकुलम. सो द स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली गॉट इन. उसको पता होना चाहिए कि वो सही जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दे डू देयर ड्यूटी. दे वुड नॉट सेंड यू एनी फेक इन्फॉर्मेशन कि हम ये करते हैं, एंड व्हेन यू एंटर देयर इज नथिंग. नो, you'll have exactly what they send. And you know what the beauty is? When I got the offer letter, I got an assignment. So they gave me a taste of PGDM. मेरे को एक assignment मिला था, so I had to bring that assignment on the first day of joining. So this is how how is the feeling of getting assignment on the very first day? It was like my college has started. It's like हो गया अब शुरू, PGDM का कोर्स स्टार्ट हो चुका है. So it was very nice. It was good to know. It was like एक होता है ना टिक मार्क होता है कि यार अच्छा कॉलेज है. असाइनमेंट दिया फर्स्ट डे, और एक्साइटमेंट थी कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे अपना असाइनमेंट लेके जाना है, मुझे प्रेजेंट करने मिलेगा और लोग मुझे सुनेंगे, और तब मुझे लोग जान जाएंगे कि हाँ बात तो है लड़की में. तो these were the extra points that मतलब मुझे जेल बजाज के ना उस पर डाउट नहीं हुआ कि यार मैंने सही डिसीजन लिया. वो मेल देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था. तो अगर इन सारी चीज़ों को हम सम अप करें तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए. अगर आप पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बारे में, आप अपने आप को कितना जानते हो और आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या क्या किया है, क्या आप उसे जानते भी हो, असिस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, विच इज इम्पोर्टेंट. अब एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो भी दो तरीके से होता है. पहला तो वॉक इन, जिसमें बच्चा आता है, सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की ले सकता है आराम से, राइट. दूसरा जो है ऑनलाइन प्रोसीजर. ऑनलाइन प्रोसीजर में क्या होता है, बेसिकली बच्चे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर मल्टीपल वेबसाइट से दे गेट अ कॉल और अ टेक्स्ट, और बच्चा इस टाइम पे बहुत ही प्रेशराइज होता है कि जिस भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है वहाँ सीट कितनी अवेलेबल है या नहीं है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे को क्या डिसीजन लेना चाहिए, दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. So look, what I did was मैंने बताया, जैसे अभी बताया कि my sister suggested me, I was in NCR for a visit, so मैं आई और I did visit, so I saw everything in person. I knew in and out about the procedure.
the college officials themselves told me about the procedure. अब जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो जो स्पेशली मैं बाहर से सिटी से आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन सबसे पहले ढूंढूंगी, ये चीज होती है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स हर अलग अलग वेबसाइट से. तो इसमें मेरा सिर्फ एक सिंपल सजेशन है, वट एवर कॉल्स यू गेट, वट एवर इन्फॉर्मेशन दे पास इन, you have official website of colleges, they have their official numbers, you can give a call and it is always answerable, they usually answer the call. You can ask, this is the information that I'm getting from the market, is it true, is it something that I can rely on, and they'll give you a confirmation. Do not rely on any third party source because ultimately jahan ja rahe ho udhar se confirmation aana zaruri hai. That's all what my suggestion is. Okay. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं. पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो पहली कैटेगरी में क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एंड देन दे लुक फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉलेज सर्च करते हैं. ठीक है. दूसरी कैटेगरी है बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, फाइनल सेमेस्टर में ही दे स्टार्ट प्लानिंग कि उनको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि आधे हाफ ऑफ द पीपल आर गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट देते हैं, मैट देते हैं, राइट. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सोचते हैं कि उनका प्लान भी क्या होना चाहिए. अब इसमें भी बिकॉज यू सेड एकेडमिक में देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज दैट वन शुड सी. तो अगर बच्चा अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में ही पूरी प्लानिंग कर रहा है ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन सम सर्टेन स्पेसिफिक कॉलेज, अगर बच्चे के जो फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो अप टू द मार्क्स ना हो जो उस कॉलेज में जाने की सोच रहा है या बैक लग जाए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे को क्या करना चाहिए? मतलब इस पूरे सिनेरियो को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. Okay. So first category is always sorted. तो उसमें तो I don't think मुझे कुछ आंसर देने की जरूरत है. They're done with everything and then they're looking for a college. That's sorted. Especially people who are preparing for a competitive exam, right? So obviously plan A उनका tier 1 college होता है, and if not tier 1 college, if they do not qualify, right? So the only plan B is tier 2 colleges. ठीक है. So obviously GL Bajaj tier 2 colleges में is one of the very good colleges, right? So you asked कि उस केस में क्या होगा when they're giving their final exams and what everything. So it's very technical thing. You cannot like override things on this कि अगर back आ गया, right? So obviously back आ गया means you're not graduated. That's very simple. So if you are not graduated, how can you pursue post graduation? Exactly. So in this case you get the admission but your backs which when they're not clear, when you're not a graduate, वो इस केस में एडमिशन जितना मुझे समझ में आता है इट्स रिवोक्ड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ सिंपल मैथ्स, इट्स अ सिंपल साइंस दैट एडमिशन कैंसिल हो जाता है बेसिकली. Yes, obviously either you would yourself revoke your admission because once you've not done your graduation, how can you do two different post graduation like two different degrees at the same time? So it's very simple. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ आपका अंडर ग्रेजुएशन क्लियर हुआ नहीं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हो. देन व्हाट्स द प्रोसीजर तो कुछ है ही नहीं. अच्छा सपोज बैक नहीं आई, ठीक है, परसेंटेज आया, तो परसेंटेज कितना होना चाहिए? So honestly, to be very honest, मेरे से जो परसेंटेज लिया गया था तो एग्रीगेट टिल द टाइम ऑफ माय एडमिशन जितना था, if that was satisfied, so like मेरा जो so exceptions are there are certain students जिनका नहीं होता है उतना, ठीक है, so वो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है टिल द टाइम ऑफ योर एडमिशन जितना उनका क्राइटेरिया है वो फुलफिल्ड है तो वो हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप जॉब के लिए जाते हो, राइट, सो परसेंटेज का जब क्राइटेरिया होता है तो वो नहीं होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका परसेंटेज कितना होगा. टिल द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू उस टाइम तक आप फुलफिल्ड हो कि नहीं हो उस क्राइटेरिया में, दैट्स व्हाट ऑल इट इज रिक्वायर्ड. एंड बस इतना ही प्रोसीजर होता है. आई डोंट थिंक इतना वी नीड टू गेट इन डिटेल. Coming to the major question now, as per our research, हमने ये जाना है कि आप कॉलेज की सबसे ब्राइट स्टूडेंट रह चुकी हैं. ओके, एंड मैंने आपका पोस्टर भी देखा है इन द कॉलेज, इन द कैंपस, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू सो मच. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका एक अच्छा प्लेसमेंट भी लगा, राइट? सो कॉलेज का क्या और कैसे कंट्रीब्यूशन था इन योर प्लेसमेंट एंड योर जर्नी फ्रॉम कॉलेज to the corporate? Okay. You took me back again to that special moment when I got a mail and then started receiving congratulations messages that yes, I got placed. And then I realized, okay, after a few months, I'll be getting salary. So that was very special. Okay. So coming to the part when I got placed. So how the journey was like. So the journey started from the very first day. So every trimester, there is one subject called SSP, that is special skills, right?
So एक special skills program होता है wherein they groom you for how you like turn up in a GD. When there is a PI, there are different types of interviews I was not aware of. So there are some situational interviews, there are some pressure interviews. So I only knew that there is a personal interview. So वो curriculum इस तरीके से डिजाइन किया कि we got to know कि इतने इतने तरीके के interviews होते हैं, वो आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है कि आपका कैसा इंटरव्यू हो रहा है, राइट? सो दे ट्रेन यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. सो आई टोल्ड यू, एक तो करिकुलम में एकेडमिक्स में एक सब्जेक्ट होता है दैट ट्रेन्स यू फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स, and then there is an association in our college. So why I say GLBIMR is good, why did I decide? So there is an alumni association for us who majorly, they do not work on academics, they are there for us majorly for the placement thing. They train us, they groom us on how the interviews would be, how the GDs would look like. So they train us on the hardcore part, like how would we feel when we sit for an interview. तो वो एक legit interview होता था कि एक HR अगर इंटरव्यू लेगा तो कैसा. And then there was a special CRC cell in our organization, in our like college, right? So वो उसी चीज पे काम करता था कि हमको क्या, they used to tell us the expectations of companies, right? उनके पास पूरी details आती थी. So I still remember when the companies were coming in. So I was the luckiest one, I would say. So that was the company that I got placed in, was the first company that came in for my specialization, and I got placed in the very first company itself. So the company was Archer and Bull. So I was very excited because I always wanted to be in a consultancy. I wanted to start my career with a consultancy so that I could decide कि आगे चलकर मुझे किस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, क्योंकि मैं टैलेंट एक्विजिशन में जा रही थी, राइट? सो आई डू नॉट नो मेरे को किसकी हायरिंग करने में ज्यादा अच्छा लगेगा. सो गेटिंग इनटू कंसल्टेंसी वुड गिव यू एन एक्सपोजर. सो सजेशन टू एचआर पीपल, कंसल्टेंसी ना एक्सपोजर देता है आपको जब आप अलग अलग वर्टिकल्स की हायरिंग करते हो. तो ये कॉलेज ने मुझे पूरी इन्फो दी. हमारा पूरा एक सेल था जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देता था, हमारा सीआरसी में पूरे एडुकेट करता था इस बारे में. सो ये जर्नी चल रही है. वी गॉट थ्रू लॉट ऑफ इंटरव्यूज. So before every interview, the actual interview, actual round that we were getting into, our association, the alumni association that I'm talking about, which is Project Sahyog, to be very specific, I'm very thankful to them. So we used to sit in interviews. रात में मैं 11-12 बजे भी बैठ के मैंने interviews दिए हैं, just to be very clear कि when I'm getting into an actual interview, जो गलती मैं यहाँ कर रही हूँ वो वहाँ मैं repeat ना करूँ. So college plays a very important role. They would never leave you. So it's a very good way of spoon feeding us. They actually do not spoon feed you, but they make you like ready for a final scenario. But what I think at times you need that. You need that because ultimately you're a student, right? You're a fresher. You do not know. And the people who are sitting in that association that I'm talking about, they're the people who are VPs of certain organizations. They are national heads, right? There are people who are actually HRs. So they give you the like perspective of everything. See, if a person with certain designation is sitting. So the kind of interviews that I gave, first I gave it to an HR. Then the final round was given to the founder of the organization. So my college did prepare me in a certain way कि मैं अगर किसी like middle level person को अगर interview दे रही हूँ, so how am I supposed to react, कैसा pressure होगा. And then when I gave an interview to VP जो alumni association में थे, so the kind of pressure that person created on me was the same pressure that I got from the founder of the organization actual interview में. So the college like has a curriculum, has all the facilities. It's just that you need to gauge it. Complete insight. Because there are a lot of students in college कि कुछ बच्चे होते हैं, that's their choice, right? कुछ students होते हैं, they come to the college just for the fun part, right? Because that's the last part of your पढ़ाई वाला season, right? Post graduation is something that is last. So कुछ आते हैं सिर्फ मस्ती करने के लिए. So it's up to you. The college I'm talking about that I was in, they give you every platform to work on. Every platform. GDPI, इतने GDPI दिए ना, I cannot count on fingers. मैंने इतने PIs दिए हैं, and giving it in odd hours. So हमारे college का एक scene होता था. They used to take interviews in odd hours so as to create pressure so that we could handle pressure. क्योंकि जब मैं interview देने गई थी, I went at 9:30 and I came back at 7. मैं उस ऑफिस से 7 बजे निकली थी. इतना प्रेशर होता है ना, कंपनी आपको रोक के रखती है जस्ट टू चेक कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो. हर थोड़ी देर में एक राउंड हो रहा है, हर थोड़ी देर में एक राउंड हो रहा है. तो कॉलेज ने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था. तो वहां जाके आई वाज फीलिंग वेरी ईज आउट कि हाँ ठीक है. आई वाज यूजिंग माय मोबाइल फोन एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. आई वांटेड माई सेल्फ टू बी वेरी ईज्ड आउट. सो या कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट पार्ट. और वो जो कॉलेज में जिस तरीके से एक्टिविटीज हुई है ना, जिसमें हमें इंडल्ज किया गया, तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट बहुत ईजी लग रहा था क्योंकि यार हम तो वैसी एक्टिविटीज करके आए. हमें ऐसा फील होता था कि यार जब मैं कॉलेज में थी मैंने ऐसी चीजों में पार्ट लिया, ऐसा इंटर्नशिप में किया जो एक्चुअल कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी. सो द कंपनी दैट आई एम करंटली वर्किंग इनटू, सो आई मेड अ स्विच, राइट? Currently I'm in Bajaj Capital, and it's the same organization where I did my internship in. Okay.
So college आपको opportunities ही ऐसी दे रहा है ना कि you will get a very good exposure. It just like it's a simple quote people say, right? It's a saying that opportunities do knock your door. It's just that up to you if you open it or you keep it shut. So it was me always opening it. That's it. Done. So आप एक HR है, HR मैनेजर एग्जीक्यूटिव, राइट? सो एक जब कंपनी आती है किसी भी कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम HR के दिमाग में या क्या एक्सपेक्टेशन होती है फ्रेशर्स से? To be very honest, college ना बहुत सारी hype create करता है कि you need to be prepared with this, need to be prepared with this, but company जिस motive से आती है ना, they want first thing which is foremost कि आपके अंदर एक learning वो होना चाहिए कि go getter opportunity वाली चीज होती है ना, कि वो होना चाहिए, you're there to learn everything. कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आप नहीं भी कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो ना, बट वो देखता है कि आप कर सकते हो, पोटेंशियल आपका दिखना चाहिए. देन आपने जो पिछले 2 साल में पढ़ा है, सो व्हेन यू आर गेटिंग इन HR यू शुड बी थरो विद थिंग्स. सो हाँ, कंपनी कुछ टेक्निकल चीजें देखती है और उसके लिए वो है ना, ऐसा नहीं है कि दे वुड आस्क यू एम्बिगुअसली कुछ भी. दे सेंड अ JD, उसके बेसिस पे वो आपसे पूछेंगी सवाल, आप वो ये देखेंगे कि उन्होंने जो JD भेजा है उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि नहीं. वही JD क्यों भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट? द इंटरव्यूज आर वेरी इजी इफ यू गो थ्रू द JD प्रॉपरली. ठीक है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती. एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू गेट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, और आपने अपने पिछले 2 साल में क्या अपने अंदर वो ऐसे किया है प्लस पॉइंट कि दे शुड हायर यू. दे आस्क यू नो व्हाई वी शुड हायर यू, सो दे शुड हायर यू एंड नॉट द अदर पर्सन. So ये मतलब कंपनी की कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है. अल्टीमेटली यू आर अ फ्रेशर, राइट? द वन थिंग दैट यू माइट हैव डन बिफोर गेटिंग फॉर द इंटरव्यू वुड बी अ internship which is just 2 months. ठीक है, तो उसी में what you have learned out of everything that you've been in these 2 years, that's what the company. So basically your will to learn and your enthusiasm and the knowledge obviously plays Knowledge, a very that is major like- role. That's what you are meant for. That's permanent. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब इंटर्नशिप का टाइम आता है तो कॉलेज 2 टाइप की कंपनीज लेकर आती है. एक तो स्टार्टअप कंपनीज लेकर आती हैं और दूसरी जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं. तो स्टूडेंट शुड बी सेंटेड टुवर्ड्स द ब्रांड कंपनी और कैन ऑप्ट फॉर अ स्टार्टअप कंपनी एज वेल. दिस इज वन क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, पीपल आर मोर इंडल्ज इनटू एकेडमिक कि हमें अपना एकेडमिक अच्छा करना चाहिए, तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा को करिकुलर जो एक्टिविटी है उसमें भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए कि एकेडमिक्स कैन हेल्प? Okay, so starting with the second question. Okay, so co-curricular activities, मेरा opinion ये है कि GLBajaj में जितनी भी activities होती हैं, if people know, it's complete student driven. Be it their annual fest जो हम करते हैं, संकल्प कहते हैं जिसे, ठीक है, या जो ये concerts होते हैं, right? So it is completely student driven. So when you get yourself in these activities, right? So इससे आपको एक exposure ये मिलता है कि अगर आप corporate में जा रहे हो अपना final वो करने के लिए, अपना काम करने के लिए, तो वहां पे you need to be responsible for certain things. सिर्फ बुक पढ़ोगे तो only liable towards books, right? Exactly. Only liable towards your notes. So when you get into extra curricular, so obviously life में कोई भी चीज जब वो extra होती है ना, तो that gives you an extra edge over other things. So I would definitely recommend people, especially to those introvert people who sit back and see other doing things and think कि अगर मैं ऐसी जगह पे होती तो ये करती. अरे सोचना क्यों है? Get on ground and do it. You will learn. देखो, गलत करोगे एटलीस्ट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड जो एक्स्ट्रा करिकुलर, और जेल बजाज में तो होती बहुत कुछ एक्टिविटीज है, हर हफ्ते कुछ. सेकेंडली, कमिंग टू द अदर क्वेश्चन दैट वाज इंटर्नशिप्स के बारे में. सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. आई वुड नॉट कीप इट ओपन लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू पीपल की स्टार्टअप में जाओ या बिग ब्रांड्स में जाओ. इट्स द काइंड ऑफ प्रोफाइल यू गेट. ठीक है, सिर्फ स्टार्टअप मैटर नहीं करते हैं, बड़ा ब्रांड नहीं मैटर करता है. आप एक बड़े ब्रांड में जाकर सिर्फ डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, देन व्हाट्स द मैटर ऑफ गेटिंग इनटू अ बिग ब्रांड? नो लर्निंग, राइट? अब इट डिपेंड्स. स्टार्टअप का एक एक्स्ट्रा एज ये होता है ना, लाइक यू वर्किंग विद अ स्टार्टअप, यू वुड so you get an exposure to a lot of different things because they do not, if they start with, right, so उनका कुछ ऐसा streamline नहीं होता है. अभी वो experiment कर रहे हैं अपनी operations में, ठीक है. so you get an extra edge. जो बड़ी brands होती हैं, it's a streamlined process, so उसकी भी अपनी learning होती है. you know what next step you need to take in, वहाँ कोई बताएगा नहीं. so the two different things are, there is a place where you would know अब अगली चीज क्या करनी है, and you would know how your learning is going to look like. और startup में एक extra advantage ये होता है, you know what is, like you do not know what is the next step, right? You're working on different vertical, और जो एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया, तो you come up with a motivation कि चलो अगला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वो तो पास हो ही जाएगा. so hit and trial basis होती है. and also I think you know where things are going wrong and where you need to correct, and you would know आगे कॉर्पोरेट में जब जाओगे, और मान लो स्टार्टअप में काम करने के बाद किसी बड़े ब्रांड में जा रहे हो, तो you would be there coming with a lot of suggestions कि नहीं मैम इस टाइम पे ऐसे होता है. everything has its own advantage, so I would not
pressurize people to go for startup or go for a big brand. It's up to you how you yourself want, like you want yourself to see into certain positions. Yeah, So, how you see yourself there in different exactly, things. that's my take. ओके मैम, तो आई वुड लाइक टू नो कि आप कुछ सजेशन देना चाहोगे जो कमिंग बैच के जूनियर्स अब आने वाले हैं और आपकी अब इस पूरी जर्नी को देख के दे आर लाइक इंथुजियास्टिकली वेटिंग टू गेट पीजीडीएम डन फ्रॉम जीएल बजाज, तो कोई सजेशन फ्रॉम योर साइड टू देम? So guys, suggestion is visible, right? मैं इतनी एक्स्ट्रावेगेंजा पर्सनालिटी नहीं थी. Obviously I was extrovert, लेकिन वो एक होता है ना जो extra edge. I have this confidence of coming on this platform and talking to people, right? Addressing a lot of people. So suggestion ये है कि come with an open mindset. कि you are there to learn everything that comes onto your plate. I would consume everything that is there on my plate. Come with this thing. एंड बी फोकस्ड कि लाइफ में चाह क्या रहे हो. अगर यही चाह रहे हो ना कि 2 साल मस्ती करनी है तो उस पर फोकस करो. दैट्स माय ओपिनियन. आई वुड नॉट प्रेशराइज पीपल कि आ रहे हो तो पढ़ो पढ़ो. नो, एवरीवन हैज देयर ओन अल्टीमेट गोल. सो वो जो गोल है ना उससे अपने आप को मत हटाओ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे पर्सनली आके चेंज होंगी एज अ स्टूडेंट. बहुत कुछ आता है लाइफ में. Do not want to mention. There are a lot of distractions that come in the way. Do not get yourself distracted. Ultimately karo, fun karo, that's part of life. But one mantra that is stick to your ground and stick to goals. That's something that I would definitely suggest. I would definitely agree with you. And ma'am, let's just end the beautiful podcast with a rapid fire round. Okay? तो आपको सारे questions का one word answer देना है. Alright? Are you ready for it? Yes. Okay. Very No good. pressure? No pressure. Alright. So my first question, highest package? It's like 18 to 19 LP. Okay. Average package? Somewhere between 6 to 7. Your package? I would done this ball. चीटिंग 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 करता है तू. Alright. GL Bajaj? Family. GL Bajaj faculty? Blessed. Your hostel life? Home away from home. Alright. Your corporate life? Still learning. Favorite application in your phone? Provider app. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. And lastly, how's your life? Amazing. Alright, it was nice. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable and precious time. I'm so happy to host you. Also, ending this entire video in a good note, would you like to say something about us? Okay. So the first thing that I want to talk about you people is I'm very proud that this startup belongs to the place that I also completed my journey with, that is GL Bajaj, right? So I'm very happy that people at GL Bajaj came up with such a good solution, right? And I'm very happy how the idea has come up with, and how these people come up with that idea was a problem that they also faced, right? They came in a city looking for hostels and everything. So if I talk about provider ending on a good note, guys, it's a one-stop solution if you're looking for a hostel or an accommodation when you're coming to a new city. So I am very happy to be a part of this, part of their journey, if I could contribute anything for you guys, and all the best for your future endeavors. Thank you so much, ma'am.